request Finance Minister to highlight the key issues from the finance track. Thank you, Jaishankarji. As was said by the External Affairs Minister, under the guidance of Honorable Prime Minister, India's G20 presidency has worked for the theme One Earth, One Family, One Future. So today we are in a position to adopt, through the finance track, people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations. We assume the presidency at a challenging time. जितने भी विकासशील देश हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी कोशिश है कि एक ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां बदल रही हैं, हम चाहते हैं कि उन सभी देशों की महत्वाकांक्षाएं भी इस डिक्लेरेशन का हिस्सा बने। इस वक्त की जरूरत ये है कि वैश्विक पटल पर हम मिलकर काम कर सकें, एक कोलैबोरेशन के तहत काम कर सकें। Now, let me share with you just some of the key achievements. मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकती हूँ कि भारत की नेतृत्व में G20 ने वॉक द टॉक किया है, यानी जो कहा है उसे कर कर दिखाया है। To address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, 4 की पॉइंट्स हैं जो इस अग्रीमेंट का हिस्सा हैं, मैं उन पर बात करना चाहती हूँ। It is so necessary to have better, bigger and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high. These institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. The second under the MDB, strengthening ये समय की जरूरत है कि जो विकासशील देश हैं और जो आवाजें पीछे छूट गई हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, उनको भी G20 का हिस्सा बनाना है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी उनके प्रति जवाबदेही भी है। Their report consists of 2 volumes. The first volume has already been submitted. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for the bigger, better and more effective MDBs. The third point in strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBR. किस तरह से वित्तीय ऋण दुनिया के अलग-अलग देशों में उसकी मदद कर सके, उसके लिए हम सबको भी एक साथ एक रूप में काम करना होगा। G20 का जो आने वाले समय में रोड मैप होगा, उस पर सबकी जवाबदेही हो और सब उस राह पर उस उद्देश्य के साथ एक साथ चलें, ये भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जो डिक्लेरेशन में रिकमेंडेशंस हैं, जो सुझाव हैं, वो इसी को ध्यान में रखकर गए हैं
कि G20 का जो डिक्लेरेशन है, उस G20 के डिक्लेरेशन में इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए कि सभी देशों को साथ में एक राह लेनी है, उस राह पर एक साथ चलना है। $100 बिलियन आने वाले दशक में उसका निवेश होगा, ये भी ध्यान आपको रखना होगा। ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो साथ में किस तरह की आर्थिक विकास की बात कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ा आर्थिक लक्ष्य है। बहुत सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को साथ में पार पाना है। The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB. क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा एक स्वीकृति बन रही है और भारत की अध्यक्षता में इस G20 में भी एक सहमति बन रही है। So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to, हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर IMF के साथ और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके लिए भी एक रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं और मैं अपनी भी इसमें जो नजरिया है वो भी रख रही हूँ। रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क IMF के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं जो दुनिया भर की वित्तीय संस्थाएं हैं उनको एक साथ मिलकर बातचीत के जरिए इस पर काम करना है। Productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all three foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and a platform to safely share personal data without compromising privacy. So embedded this concept in the G20 financial inclusion agenda by formulating G20 policy recommendations for advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. This set of recommendations डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक इंक्लूसिव माध्यम होना चाहिए। G20 के जरिए हम G20 में अध्यक्षता के जरिए सभी देशों के इस पर राय मशवरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Institutional and governance arrangements by DPI and ensuring customer protection. So DPI has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान की बात निर्मला सीतारमन कर रही हैं जो कि 2024 से लेकर 2036 तक चले, जिसमें G20 के सभी देश हिस्सा लें और ये भारत के नेतृत्व और भारत की अध्यक्षता की एक अमिट छाप लेकर आएगा। The fourth one which I'd like to highlight is the debt resolution under the common framework and also beyond the common framework. Since its establishment in 2021, only Chad as a country has had its debt restructured. The others have been waiting. So since India took over the G20 presidency, good progress has been made in the ongoing country cases under the common framework of debt treatment, and the three countries in that are Zambia, Ghana and Ethiopia. We've also succeeded in using the G20 platform. गाम्बिया, गदर और इथियोपिया का उन्होंने नाम लिया है। वो कह रही हैं कि जिस तरह का आर्थिक लोन इन देशों के लिए है उसके उनकी लोन की स्थिति यानी कि डेट की स्थिति को सुधारने में भी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं G20 जैसी संस्थाएं हैं वो मदद कर रही हैं।
such appropriate recognition. क्योंकि G20 आर्थिक सहयोग का भी एक फोरम है। ये सिर्फ उन देशों के लिए नहीं है जो इसका हिस्सा हैं, बल्कि अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन के बाद हम अफ्रीका के उन देशों की भी मदद कर रहे हैं जिनका डेट रेशियो बढ़ा हुआ है। That has now become an institution which is actually acting as a catalytic agent in getting resolutions done faster. The fifth point under the finance track, which I'd like to bring to your notice, is the financing of cities of tomorrow. Key concerns of the low-income countries and emerging markets is always been to mobilize resources for financing sustainable, resilient, and also inclusive cities of tomorrow. The G20 principles, which are issued for financing cities of tomorrow to promote effective and efficient use of financial resources to support urban development that is socially inclusive, environmentally responsible. देखिए, बड़ी बात निर्मला सीतारमन ने उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि G20 जो कि खास तौर से एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मंच है, यानी कि आर्थिक सहयोग का मंच है, लेकिन हमें गर्व है इस बात पर कि जो बदलता जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, यानी कि जो बदलता हुआ वैश्विक मंच है और उसमें वैश्विक जो दिक्कतें हैं, जो एक सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सुरक्षा को लेकर जो कई मुद्दे हैं, हम उन पर भी बात कर रहे हैं। और हमें क्योंकि लगता है कि ये सारे मुद्दे देश की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालते हैं, इसीलिए हम अर्थव्यवस्था के साथ साथ इन मुद्दों के भी हलों पर काम कर रहे हैं। In India, for tax and financial crime investigation in collaboration with the OECD. The seventh, on which I'll elaborate, is mechanism to support the timely and adequate mobilization of resources for climate finance. Till date, the conversation was focused on calling on developed countries to say, where is that $100 billion US dollars, which didn't come. But Indian presidency adopted an action-oriented approach, and the G20 explored mechanisms that can support timely and adequate mobilization of resources for climate finance, facilitating access to multilateral climate funds and enhancing their leverage and ability to mobilize private capital has also been our focus. निर्मला सीतारमन कह रही हैं कि जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित दिक्कतें हैं और उनमें उनको लेकर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें लेकर जिस तरह का ऋण देशों के पास पहुंचना चाहिए वो अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके लिए भी एक ग्लोबल फोरम हमने तैयार किया है, जिससे के लिए उस वैश्विक मंच से आर्थिक सहायता देशों को दी जा सके क्लाइमेट चेंज के लिए भी। सिर्फ किसी एक देश के ऋण पर निर्भर ना करना पड़े, बल्कि इस वैश्विक पूल से भी उन देशों को पैसा पहुंच सके जिन्हें दिक्कत है और जो उस पैसे की मदद का इंतजार कर रहे हैं। Both on pricing and non-pricing. And the third one, enhancing finance health collaboration so as to cover many other work streams as well. So I listed out 7, elaborated on them, 3 others which have not elaborated, but on all of them, substantial progress and outcomes have been achieved. India's received tremendous support from the G20 members across the table. The outcomes of the Indian presidency are a testimony to India's commitment to multilateralism and for international cooperation. We assure the upcoming Brazilian presidency of our strong support and to continue the momentum on key issues of global importance. I now hand over back to Minister Jaishankar. Thank you, Nirmala ji.